So guys, I'm back with again, this all new lineup, and abhi I'm gonna talk about the Galaxy AI. अब Samsung था और AI बना रहा था, तो one thing was obvious that they would use the word Galaxy for sure, तो बन गया Galaxy AI. Now I'm just wondering if Apple does an AI, would it be called IAI? एप्पल बीइंग एप्पल, मतलब वो देखते हैं, बट अभी के लिए एप्पल फोन्स डोंट हैव द काइंड ऑफ एआई एक्सपीरियंस जो सैमसंग ने यहाँ पे हमको प्रोवाइड कर दिया है इन ऑल दीज फोन्स विद गैलेक्सी एआई, एंड द एक्सपीरियंस इज गुड स्टार्ट इन द राइट डायरेक्शन आई वुड से, बिकॉज स्मार्टफोन्स हम बोलते तो हैं कि स्मार्टफोन्स हैं, बट समटाइम्स दे आर नॉट टू स्मार्ट, व्हाइल डूइंग थिंग्स यू फील कि यार काश द फोन कुछ वो अपने से कर देता, कुछ रेकमेंड कर देता, तो मतलब द एक्सपीरियंस वुड हैव बीन बेटर. But now let me tell you, with the power of Galaxy AI, we have some amazing features in places जहाँ पे शायद हमको जरूरत है स्मार्ट फीचर्स की. सबसे पहले हमारे पास में लाइव ट्रांसलेशन है, and the live translation gives you the opportunity कि जब आप एक लाइव फोन कॉल करते हैं, you can translate, on the go in multiple languages across a list of 13. जहाँ पे सामने अगर आप किसी से फ्रेंच में बात कर रहे हैं and the guy is saying bonjour, आपको सुनाई देगा प्रणाम या नमस्कार या नमस्ते, whatever the AI is giving you. तो basically I think it's a nice experience that I think you have the superpower now with the help of AI that you know all these languages. Basically your phone does, but the phone is with you, it's acting as a companion. और आप जब phone call करेंगे तो there is no problem whatsoever in this translation field of view. अगर हम बात करते हैं in person, this can do offline translations in person. अगर आप कहीं travel करने जाते हैं, no need of any internet, on phone, on device, all the processing is done, and आप live किसी और language में किसी से बहुत easily conversations कर सकते हैं. If I talk about some other features, तो if you are chatting, तो अगर आप किसी को टेक्स्ट कर रहे हैं and you want to leave a nice impression on the other person कि हाँ आपने एक बहुत ही अच्छी शशि थरूर टाइप्स की इंग्लिश बोल दी है फॉर एग्जाम्पल, या फिर आप किसी और लैंग्वेज में बात करना चाहते हैं, अगेन द फोन इज powerful enough to understand the context, understand what you're writing, understand who you're writing it to, and then give you different tonalities of the same exact phrase. तो आपके पास में ऑप्शन मिल जाता है not just translation but also to kind of rephrase what you wanted to say in a nicer way or maybe in a very casual way, the way you want. अगर आपको इंस्टाग्राम पे कैप्शन चाहिए तो वहाँ पे आप थोड़ा सा चिल टाइप कर सकते हैं. अगर आपको बॉस से छुट्टी मांगनी है, there you can have a bit formal conversation. तो ये भी Galaxy AI कर देता है. Then what AI is able to do is to access and analyze the text that you have written. Basically अगर आपने एक note लिया है and if the note is too long, we just push of a button, AI can format that text. उसको पता है कि what are the bullet pointers, what is the heading, what is the context and everything. It will give you a nice presentation for that exact note जो आपने casually type कर दिया था. Let's say if you want to search for something, you just circle आपके स्क्रीन पे, let's say you have a piece of jewelry, you have a monument, you have something, you just circle it and AI will give you the results basis of what you have highlighted. तो मेरे ख्याल से ये फीचर्स काफ़ी अच्छे हैं. And coming to my personal favorite, it's the Galaxy AI in terms of photography and videography. मतलब once you have captured whatever you wanted to, because mobile phones, cameras कितने ज़्यादा powerful हो गए हैं and we all are capturing straight from the smartphones. Once you have captured something with the power of AI, you can enhance that shot. You can remove any unwanted reflections. अगर आपके पास में frame में कुछ shadows आ गई, अगर आपको उनको हटाना है, and the results are mind blowing, all thanks to the power of AI. You can in fact slow-mo video बना सकते हो from a normal video. Just think about it. Instagram पे I know everyone wants this nice slow-mo with a nice music, but what if कि आपने वीडियो नॉर्मल रिकॉर्ड किया है? Once you have shot the video, the AI will fill in all the frames required to convert that video in a slow motion video. तो मतलब really amazing features coming up. अगर आप किसी shot को reframe करते हैं, let's say you want to enlarge yourself or you want to reposition yourself in a particular frame. अगर आपने jump किया है but आपके friend ने आपकी photo ठीक से नहीं खींची है at the right time of the jump, you can reposition yourself to make as if कि you are flying mid-air. आप unwanted objects को remove कर सकते हैं and AI will give you all the suggestions on a normal shot. So I think all these features combined in terms of AI
really elevate the experience and considering it's AI, considering यहाँ पे हमको updates देखने को मिलते रहेंगे और आगे चल के, this is just the beginning and I'm sure with the power of Galaxy AI and many more things in the background happening जो शायद मुझे आपको नहीं पता है, the phone is really taking care of all that behind the scenes. तो let's see what else comes up और आगे चल के कैसे Samsung इन फीचर्स को enhance करता है, but for now I think in this episode you have a complete idea now about ये जो नए phones आए Samsung की तरफ से and इनके अंदर क्या क्या smart features हैं. वैसे the show will definitely make you smart because break के बाद I'm gonna give you a nice tip and I'm gonna answer all your questions in this segment of Ask TG. So stay tuned. I'm gonna see you right after this short break.